Question is, consider the relation on the set -2, -1, 0, 1, 2 defined by AB belongs to R if and only if. We have to satisfy this condition. 1 plus AB is greater than 0. Among the statements, the number of relation in R is 17. R is an equivalent relation. You have to choose one of the correct option. Question is taken from JEE Main 2026. Concept of equivalent solution. A cross -2, -1, 0, 1, 2. Cross -2, -1, 0, 1, 2. This is all. इसका कार्डिनल प्रोडक्ट बनाया और pick up the pairs only which satisfy the condition. -2, -2, -2, -1, -2, 0, -2, 1 and -2, 2. Condition is 1 plus AB greater than 0. ये A है, ये B है. So this is correct. -2. In this case, this is A, this is B. AB. This is correct. Then 1 plus AB. ये 0 हो गया. Greater than 0. Correct. Then 1 minus 2 नेगेटिव आ गया, ये नहीं होगा. -2, 2, 0. -2 AB, AB. -4, this is wrong. इस रो में आ गए 3 एलिमेंट्स. Similarly, -1, -2, -1, -1, -1, 0, -1, 1, -1, 2. इस केस में चेक कर लीजिए कितने आएंगे. 1 plus AB, ये A है, ये B है, तो दिस इज द करेक्ट वन. This is the correct one. Then this is correct one. This is wrong. This is wrong. 3 elements इसमें आ गए. Third row. 0 minus 2, 0, minus 1, 0, 0, 0, 1, 0, 2. इस केस में all 5 will be there. All 5 will be there. Similarly, 1, 2 से 5 बनाएंगे and 2 minus 2 से 5. इसमें सेलेक्ट हो गया आएगा 3. इसमें सेलेक्ट हो गया आएगा 3. I have discussed the methodology. You can make the cardinal product and satisfy this condition. Satisfy this condition. So number of relations हो गए 17 numbers. For equivalence relation, what is the condition? Reflexive, symmetric, and transitive. From the reflexive is ARA. 1, 1, 2, 2, 3, 3 like this. Symmetric में if AB then BA. If you observe -1, 2 तो 2 minus 1 will be available. ठीक है, तो it is reflexive as well as symmetric. Relation is reflexive as well as symmetric, but not transitive. Not transitive. Transitive में क्या होता है? If A are B and B are C,
then ARC. That is a transitive, right? So I have relieved for this. I can do also to save the time. लंबा क्वेश्चन ना हो जाए. I have clear discuss the procedure. Do it yourself, right? Next question. Question इसका correct answer होगा. Only one is true, right? Next question. In this session, we have discussed the relation topic through illustration taken from JEE Main 2026. Till now, any doubt, you can comment. Further, we are going to discuss number of relations which are reflexive and symmetric to add in given relation to make it symmetric. Being important for this, it is requested to go through the session completely. इसी के साथ रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद colleagues and friends. Now let's start with the question and concept. Question is the number of relations defined in the set A, B, C, D, which are both reflexive and symmetric, is equal to. Its answer is oral, can be given in 5 seconds. 2 की power n minus 1 by 2. Here n is 4. 1, 2, 3, 4. 2 की power 4 into 3 divided by 2. 2 की power 6, that is 64. This is the answer. But I will explain in detail also. Reflexive means reflexive. जस्ट आप यहीं से चेक कराते पहले एक 4x4 की मैट्रिक्स बनाइए. 2-3 मेथड है इसको करने के. A, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43, A44. These are the main diagonal elements. Main diagonal elements. These are main diagonal. Means AA, BB, CC, DD. It is one way. One way. Of remaining are A21, A12. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So these are 6 elements. These are 6 elements. Upper diagonal elements. 6. So pair क्या हो सकता है? A12, A21. It can be selected in 2 ways into 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 2 ways. 6 हो गए. 2 की power 6, that is 64. By FPC of multiplication. FPC of multiplication. By FPC of multiplication means it should be reflexive as well as symmetric. Reflexive का one way into 2 की power 6 ही हो गए. So this comes out to be 64. A option is the correct answer. 6 pairs कौन कौन से बनेंगे? AB, BA, AC, CA, AD, DA. Then BC, CB, BD, DB, and ABCC. 1 रहेगा. 1, 2, AB, BC, CD, BC, BC, CD, CD, DC. So this or this 2 ways, 2 ways, 2 ways, 2 ways, 2 ways, 2 ways.
तो बाई एफपीसी मल्टीप्लिकेशन 2 की पावर 6 दैट इज 64। तो सिमेट्रिक के लिए और ट्रांजिटिव के लिए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी डायगोनल एलिमेंट्स में, जो इसके ऊपर वाले हैं उसका मल्टीप्लिकेशन 2 की पावर दैट कर दीजिए, 2 की पावर 6 दैट विल द आंसर। और डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा 2n(n-1) डिवाइड बाई 2 दैट इज द आंसर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट a equal to 2, 3, 5, 7, 9. Let have the relation A defined by x or y if and only if relation की condition given है 2x should be less than 3y. Let I be the number of elements in R and M be the minimum number of elements required to be added in the R to make it symmetric. Then we have to find the sum of L plus M. 4 options are given to you. One of the option is correct. A cross A. 2, 3, 5, 7, 9. 2, 3, 5, 7, 9. इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया हमने। कंडीशन ऑफ रिलेशन इज 2x should be less than equal to 3y. Means total number of order pairs will be there 5 into 5, 25. Out of 25 we have to pick up the elements which are satisfying this condition. So at x equal to 2 we make the order pairs 2, 2, 2, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9. चेक, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है उसको टिक कर दो। 2, 2, 4, 6 करेक्ट, दिस इज करेक्ट, ये डेफिनेटली करेक्ट होगा। बहुत ग्रेटर तो ये, तो इसमें आ गया 5 एट एक्स इक्वल टू 2 पे था, एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 3 पे देख लीजिए 3, 2, 3, 3, 5, 3, 7, 3, 9। इस पे क्या बनेगा 2x 6 एंड दिस इज 6 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट आएगा 2, 3 and this is 2, this is 3, 3, yes 3, 3, this will be correct। इसमें 3, 3 correct, this will be 3, 2, 3, 2, 3, 5, this is 3, 5। जिसका y ग्रेटर है वो तो करेक्ट हो गई होगा, करेक्ट। इसमें 5 आ गए कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए। x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 9। सिमिलरली हम चूज करेंगे इसमें x इक्वल टू 3 में 5, 5, 5, 7 एंड 5, 9। लेस वाले नहीं आएंगे, इक्वल दिस, तो इसमें हो गया 3। x इक्वल टू 7 में x इक्वल टू 5, 7, 9, 7 में आ जाएंगे 7, 5, 7, 5 में देखें 14, 15 करेक्ट, 7, 5 देन 7, 7 देन 7, 9, बाकी रिजेक्ट हो जाएंगे। इसमें 3 आ गए। x इक्वल टू 9 में x इक्वल टू 9 में देखिए इसमें आएंगे 9, 7 एंड 9, 9, बाकी सब रिजेक्ट हो जाएंगे सेटिस्फाई दिस कंडीशन। इसमें हो गए 2। तो टोटल नंबर ऑफ elements satisfying the condition 2x plus 3y, it comes out to be 5
10, 16, 18 numbers. 18 numbers. Right? Now to check for symmetric. Symmetric के लिए 2, 5 पे हमें एक ऐड करना पड़ेगा 5, 2. 2, 5 पे 5, 2. 2, 7 पे ऐड करना पड़ेगा 7, 2. 2, 9 पे 9, 2. ये ऐड करना पड़ेगा. देन 3, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 5 पे 5, 3 ऐड करना पड़ेगा. 3, 5 पे 5, 3 ऐड करना पड़ेगा. 5, 3. 3, 7 पे 7, 3 है. 3, 7, 3, 7. ये 5, this is 5. This is 5. 3, 7 पे 7, 3 ऐड करना पड़ेगा. 7, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Then 5, 5, 5, 7, 7, 5. 5, 9. 5, 9 पे 9, 5. 6 हो गए. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 1 pending. 3, 9. 3, 9 का 9, 3. 9, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Means to make relation symmetric. To make relation symmetric, 7 elements are to be added as shown above. Means symmetric में क्या होता है? A R B then B R A. ये condition satisfy हो. First of all, we make the relation satisfying the given condition 2x less than equal to 3y. उसमें हमारे 18 elements आ गए. Next part was to make it symmetric. To make it symmetric in this condition. फिर वो condition को हम नहीं check करेंगे. We will make the ARB then BRA. उसमें 7 elements add करना है. Total number of elements. L plus M. 18 plus 7. That is 25 is the answer. Let's check it. C is the correct answer. Now, I would like to request, if you are new to my YouTube channel, Shift Learns, please like and subscribe to my channel and press bell icon to receive updates on concept killing videos. Thank you.